the Changemaker 20 Summit, where we all have gathered to celebrate innovative ideas and initiatives that are driving positive change in our world. I am Tina Banerjee, and I'm thrilled to be your moderator for this incredible event. Now, before we dive into our panel discussion and presentations, let's set the stage. The Changemaker 20 Summit is a platform that brings together visionaries, activists, and entrepreneurs, and also thought leaders who are at the forefront of creating lasting impact. Now, this event has started from 15th of August, and today we are having the fourth day of the event, where we'll be exploring diverse perspectives, share inspiring stories, and engage in meaningful conversations. Along with this, before we begin, there are a few housekeepings. Please silence your phone and other electronic devices to minimize distraction as much as possible. We'll also have dedicated question answer sessions, so get ready with your question at the end. We'll address them all togetherly. Moving on to introduction without further ado, the Changemaker 20 Summit aims to harness the power of youth by providing a platform for young changemakers. As I already mentioned, today is the fourth day, and the theme on which we'll be exploring ideas and perspectives, exchanging our ideas, is poverty alleviation and economic inclusion by educated youth or by the youth of our country. Working towards the eradication of poverty by creating economic opportunities for marginalized communities, focusing on micro enterprises, job creation, and financial inclusion. So with this, I am honored to introduce four remarkable organizations that have been making significant contribution to various spheres of development. So starting with Aga Khan Rural Support Program India, AKRSP is a non-government development organization that works as a catalyst for the betterment of rural communities by providing direct support to local communities active in over 3,255 villages of Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, and Maharashtra. It has impacted lives of over 3.5 million people from marginalized section of societies. Now, from there, we have with us Vaishali Ben from Junagadh, Gujarat. She's a self-made women entrepreneur running a business independently. Entrepreneurship, running a business, and she has not only inspired other women but is also providing them with employment through her venture. Along with her, we have Drishti from the same organization, currently working as a specialist in the field of enterprise development at Aga Khan Rural Support Program, focuses on enhancing the capabilities of both youth and women. She holds an MA in Development Studies from Azim Premji University and also have completed BA Honours in English from Lady Shri Ram College. Welcome you both on the panel. Moving on, up next we have BAIF Development Research Foundation, which is an NGO that has been actively involved in rural development for decades now. BAIF's core areas of intervention include agriculture, animal husbandry, watershed management, and renewable energy. BAIF is also known for its initiatives related to rural healthcare, women entrepreneurship, empowerment, and skill development. From BAIF, we have with us Ms. Vandana. She is from Jangalpada, a village of Patadi Gram Panchayat Johar district. She has been associated with BAIF as eDost since December 2019. Along with her, we have Pragati Swami, who has joined BAIF from 2022 as a project leader and have been handling the Integrated Village Development Program project. Moving on, up next we have FES, Foundation for Ecological Security. It is an Indian non-profit organization dedicated to the conservation of natural resources. FES works closely with local communities, especially in rural regions, to promote sustainable land and water management practices. We have with us from the organization Lakshmi. She's from the community. She is a women leader from Singapore village of Nivas block in Mandla. Her sustained efforts through Mahila Sabha lead to increase in presence of women in Gram Sabha of the village. Along with her, we have Harshal, who is working as a project manager. He is working in Mandala landscape from past 1 year. He is working towards promoting sustainable livelihood interventions, ecological societies, and rural governance.
Last but not the least, we have PRADAN with us. It's a prominent Indian non-governmental organizations that have been working to empower marginalized communities, particularly women in rural areas. With a focus on sustainable development, PRADAN strives to create positive and lasting change at the grassroots level. From Pradhan, we have Chandrakali Markam, a tribal woman from Kureli village in Dindori district, MP. Along with her, we have Poulomi Mallick. She's a social development practitioner and expert with 7 years of experiences in working on grassroots level with tribal population for poverty alleviation and women empowerment in central India. I welcome you all. We are truly honored to have you all with us today. Your insights and experiences are invaluable, and we look forward to hearing your thoughts about today's theme. So, without further delay, we start the first session or set of sessions of the day. So, I would like to request all the speakers. So, starting with the question like, what inspired or motivated you to embark on this journey of making a change? Along with that, I would also like to ask you that what is your idea of development? Let's start with Vaishali Ben from AKRSP. Am I audible? Yeah. So would you like Vaishali Ben to go first, or would you like me to go first? Anyway, we'll go. I mean, I think. But Yeah. both of you have to answer individually over this question. So, speaking of how I got inspired to work in the development sector, I really feel that it was the sector that found me, in the sense that I tried multiple things, and this was something that just hit the right sweet spot. This is the only thing that kind of gave me a satisfaction of having a full work day. So that's that. And in terms of the role I am in currently, which is around entrepreneurship and financial inclusion, livelihood generation, uh, that happened by fluke too. I was working on an awareness program, on designing an awareness program, and eventually realized that the set of people, or the set of women that I'm working with, uh, are probably more in need of financial inclusion, or let's say financial empowerment, rather than maybe financial inclusion being the first step to women empowerment, or let's say any kind of social empowerment. So having realized that along my journey, that's how I stumbled upon the sector and then the theme I'm working in. Answering your second question as to what, according to me, is development, I think right now exactly what I'm doing at Aga Khan Rural Sport Program is what my sense of development is. Development for me is working on the ground where the change is actually happening, and I think it's a process of unlearning things that the textbooks taught us for so long and so many years, and learning new things as we go along the way. Even the smallest of the things, let's say, maybe if something like a new word in Gujarati, or like a new trick to do gardening, anything. Like, I think that's what development exactly is for me. And the tricky part about, I think, being in the sector is the fact that I have this persistent realization that the kind of development that I am aiming for, and or I am trying to work in, is a little slow paced. But having said that, I also think even if it's very slow paced, or you feel like impact is very far off, it is gratifying. Gratifying in the sense that there are small things that happen, small changes, which may be like a drop in the ocean for everyone else. But for the people that you are working with, that might be the world.
So I think that's what, coming back and looping back to what inspires me, I think that's about it. And I think the exact reason is like people like Vaishali Ben inspire me to keep doing what I'm doing. Because at the end of the day, if I have someone telling me that a little bit of what you did or a little bit of what you studied for years or whatever little thing you did changed a bit of my life, I think that's what keeps me going. And I think Vaishali Ben will be able to tell better as to what's the inspiration behind, people like us being in the sector. So Vaishali Ben, आप अपनी journey बताओ. हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली फ्रॉम गुजरात, जूनागढ़ से हूँ। मेरा ऐसे तो मैं कैटरिंग विभाग से हूँ। मैं लास्ट 10 इयर्स से इसमें जुड़ी हुई हूँ। मैं बचपन से ही मुझे रसोई का बहुत शौक था, लेकिन मैंने कभी इसे ऐसा सोचा नहीं था कि मैं अपने ये रसोई के शौक को उस बिजनेस में बनाऊंगी, इसमें बिजनेस में इसका पार्ट करूंगी। जब मेरी बड़ी हुई, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं ऐसे तो बीकॉम तक पढ़ी, पर आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो गई कि मुझे पढ़ाई रोकनी पड़ गई। ऐसे हम 4 बहन हैं, घर की स्थिति खराब हुई थी, तो पढ़ना मुझे छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी। मैंने सब छोड़ दिया पढ़ना, और मैंने घर में हेल्प करने के लिए सब कुछ, पहले तो मैं मजूरी करती थी, बाद में शादी हुई, छोटी उम्र में शादी भी हो गई। शादी के बाद ऐसा सोचा कि जो मेरा शौक है उसको मैं प्रोफेशन में चेंज करके अपना शौक को अपने बिजनेस में बढ़ाऊं। और मैंने छोटे से स्टार्ट किया था। मैंने पहले तो टिफिन सर्विस शुरू की थी। छोटे छोटे गांव में तो ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई की कि मैं छोटे गांव से ही स्टार्ट करूं। पहले तो 10-12 टिफिन हुआ था, तो मैंने बोला हाँ मैं बना दूंगी। मेरी रसोई अच्छी बनती थी, टेस्ट में सबको अच्छा लगा, सब बोल रहे थे नहीं आप ऐसा कर सकते हो। तो मैंने ट्राई किया, लो बजट से स्टार्ट किया, धीरे धीरे ऐसे शुरुआत की थी मैंने। इसके बाद मैंने, जब कोई मुझे बोल रहे थे कि मेरे यहाँ प्रसंग है, मेरे यहाँ ये फेस्टिवल है, आप रसोई बना दोगे? मैंने बोला हाँ मैं बना दूंगी। तब मैं लो बजट में, कोई बोले मुझे इतने में ही चलेगा, मैंने बोला ठीक है। मैं अपना प्रॉफिट नहीं देख रही थी, पर उनको अपना एक स्थान, अपना लेवल बनाने के लिए मैं लो बजट में भी सबको बना देती थी। ऐसे ऐसे करके मैं सब आगे बढ़ी। अब मुझे अच्छा मेरा नाम है गांव में। मैं रसोई में बनाऊं, कैटरिंग विभाग में जा रही हूँ, के शादी में, ऐसे सब प्रसंग में मैं रसोई बनाने के लिए जा रही हूँ। और मेरे साथ और कई महिला भी जुड़ी हुई है। पहले तो मैं अकेली हैंडल कर रही थी, पर जैसे जैसे आगे बढ़ी, मुझे अकेले करने में दिक्कत हुई। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ है, वो हम दोनों साथ मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं। पर मुझे जब आगे बढ़ने के लिए और बड़ा ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए और लोगों की जरूरत हुई, तो मैंने गांव की और महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया। जैसे उसको भी बेरोजगार होती तो उसको भी रोजगारी मिलती। हमारा गांव ऐसे तो ये सौराष्ट्र काठियावाड़ कहलाता है, वो खेती प्रधान है। यहाँ सब खेती में ही करते हैं। यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब करना लड़कियों को ऐसे अलाउड नहीं करता। कोई जॉब करे, ओ ये लड़की तो जॉब कर रही है, यहाँ जॉब नहीं, गांव में कोई जॉब नहीं करता। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, जॉब करूँ तो जॉब में बोल रहे ये तो बाहर निकलने लगी, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए मैंने सब गांव की इस महिला को सुबह बोला कि तुम हमारे साथ आओ, तुमको जो खेतीबाड़ी में रोजगारी मिलेगी उतनी मैं दूंगी, हमारे साथ जुड़ो। ऐसे करके मैंने सब महिलाओं को अपने साथ, जैसी जिसकी डिमांड थी इतनी इतनी महिलाओं को लेके मैं सब जगह रसोई पे जाने लगी। और आज इतनी महिलाओं को मैंने सपोर्ट भी किया है, और वो महिलाओं खुद भी रसोई बना के चल रही है। अभी कोई मेरी साथ जो आई हुई सब महिलाओं हो, उसमें कोई महिला को बोला कि 40-50 लोगों के लिए आप बना दोगे, तो मेरी महिलाओं को इतना ट्रेन किया है, वो खुद भी पग भर हो रही है। वो खुद भी अभी ये रसोई का काम आगे बढ़ा रही है। ऐसे जब मैं ये कर रही थी तो मुझे इंस्पायर हुआ कि मैं कुछ आगे करूं, और अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, बढ़ती हूँ, धीरे धीरे चल के आगे कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे मोटिवेट भी हुई थी। हमारे गांव की एक बहन है, खानपरा कंचन बहन करके, वो समाज सेविका है। वो समाज मुझे हर पल मुझे सपोर्ट में मिली। मैंने कुछ भी पूछा यहाँ कैसे होता, कुछ कोई भी काम हो, मुझे वो कंचन बहन हर हमेशा सपोर्ट करती थी। आरोग्य विभाग हो, खेतीबाड़ी विभाग हो, रसोई में किसी भी जगह रसोई की जरूरत थी तो वो मुझे बोल रही कि तुम बना दो। ऐसे मुझे ये इस फील्ड में आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा मिली मुझे, और ऐसे में आगे बढ़ी। आज मेरे भी 2 बच्चे हैं।
मैं जो कर रही हूँ मैं बच्चे को नहीं करना देना चाहती, क्योंकि मेरे बच्चे मैंने ऐसा सोचा कि मैं नहीं पढ़ पाई, मेरे बच्चे पढ़े, वो आगे बढ़े, वो कुछ अच्छी पोस्ट पे जाए। इसलिए मैं तो ये कर रही हूँ, मैं अपने जैसी बेरोजगार महिलाओं को सपोर्ट कर रही हूँ और भविष्य में ऐसे भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। So to quickly sum up and translate what Vaishali Ben said for people who may not understand Hindi, although I think she spoke very, very well. Thank you, Vaishali Ben. She was telling her journey from how she started, how she had to leave her education in the middle because there were a lot of financial problems in the family. There are 4 sisters, and she's the eldest one. So she had to skip education, and then she started contributing to the family. Earlier, she used to be a daily laborer. She used to earn her livelihood and take care of the family household like that. And eventually, what happened was that she, Drishti, keeping the time constant, can you please summarize it? Yeah, thank you. Yeah, so essentially, then she really liked cooking, and she then started a catering business, starting from a tiffin service. And that was the spark, and since then it has expanded, and that's the story that Vaishali Ben was telling. And now she's employing and empowering other women and mentoring them too. So yeah. Vaishali man, truly your story is very inspiring. Like just making a hobby your passion, and now your business, and you're depending on, not only you're depending, but you are also providing work to many. You're truly an inspiration, and thank you for being a change maker in the community and making an example out there. Thank you. Moving on, I would like to call on Mike, Vandana, and Pragati. The Yes. same question: what inspired or motivated you to embark on this journey of making a change? And according to you, what is the idea of development? Right. Thank you, Tina. And as Vaishali just spoke, her story was truly very inspiring. Indeed, people like these are the inspiration why we joined this development sector. For me personally, I've always wanted to be in the development sector because working for the society is something that I always dreamt about. During the COVID, I was working in clinical trials, and we could all see the destruction that was happening around, the people suffering, and that actually truly made me take a step towards joining development sector. And during that period, I got selected for the SBI Youth for India Fellowship, which gave me a chance to explore the tribal issues, the issues of the tribal people in the rural areas of southern Gujarat. So I had a chance to spend a year over there. So I learned about various issues and the problems that they face, and I worked on enterprise based upon organic fertilizers. And thereafter, I joined BIAF as a project leader. So currently, I'm working in the northern Maharashtra region in BIAF as a project leader. And I'm working on the components which include livelihood development, education, and women empowerment. So today I have with me Vandana Tai. So she would be telling her what inspired her to work for the society. Vandana Tai. Good evening, everyone. My name is Vandana Sandeep Chaudhary from Maharashtra in Jangalpada. मैं मुझे पहले से ही सोशल वर्क करने का शौक था. जैसे मैं पढ़ाई कर रही थी ना, तभी मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करती थी बिना फीस लेके, और बच्चों को फ्री में पढ़ाना ये मुझे बहुत पसंद था. इसलिए जब भी कोविड का लगा पीरियड, तभी मुझे ई दोस्त बनने का जो चांस मिला, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया काम मिला. जैसे कि मैं घर बैठे कुछ काम नहीं कर रही थी. कोरोना के पीरियड में मैं जब भी 4 साल मॉल में काम कर रही थी थाना हाइपर सिटी में, तभी काम छूटने के बाद, गाँव आने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था. और ये जब ये दोस्त बनने के बाद मुझे लोगों की सेवा करने के लिए मिले ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ा
मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा एक काम मिला। बहुत बड़ा मौका था। हाँ, बहुत बड़ा, मतलब सोशल वर्क करने का बहुत बड़ा मौका था, और मैं अभी वो कर रही हूँ। जैसे अभी वो करते समय 4 साल हो गए हैं। So to quickly summarize, what Vandana Tai mentioned was that she is always, again, she is also always motivated towards working for people, and she used to give tuitions to children free of cost. They had all actually migrated to Thane, but during COVID, when everything was shut, she had to come back to the village. That's when BIAF helped her gain employment by appointing her as one of the e-dost, e-sakhi, who again provides various services to the village people, so that they don't have to go outside of their village. She provides those various services to the village people. Hello, am I audible? Yes. Thank you, Pragati. Thank you, Vandana. Really, both of you are inspiring me personally as well. I mean, coming from an educated background, choosing this particular development, is not easy. So really glad, and you are making difference in this particular community and world exactly. So moving on to our next speaker, I would like to call upon Mike, Lakshmi Di and Harshal. Is Harshal Hello, am I audible? present or? Hello, am I audible? Nothing. Harshal, am I audible to you? Hello? Yes, you are. Hello, am I audible to you? Hello, Harshal, hello. just can you switch on your camera? Hello. Hello? Hello? I think Harshal is having some connection issue. So I'll move over to Poulomi and Chandrakali Di. Chandrakali Markam and Poulomi. For the question, Chandrakali will be answering first. सभी को नमस्ते। मैं चंद्रकली मरका जिला डिंडोरी से हूँ। Poulomi, am I audible to you? Hello? Yeah, are we audible to you, Tina? Yes, Right. yes, you are. चंद्रकली मरका रानी दुर्गावती तेजस्विनी महिला संघ की सदस्य हूँ, बोर्ड मेंबर हूँ मैं। और मैं 2005 से समिति में जुड़ी हुई हूँ। अभी 14 से 15 साल हो गया समिति में, SDG में जुड़े हुए मेरे को। मेरे जीवन का सपना बहुत सारा था। अभी मैं रानी दुर्गावती तेजस्विनी महिला संघ की भी सदस्य हूँ और रानी दुर्गावती मुर्गी पालक कोऑपरेटिव के भी सदस्य हूँ। और मैं 15 लोगों के साथ में मुर्गी पालन के काम चालू की थी। और मेरे भी बहुत सपने थे कि मैं भी कुछ रोजगार करूं। पढ़ाई का मेरे को भी बहुत शौक थी, पापा नहीं पढ़ने दिए, मैं पढ़ी नहीं लिखी नहीं हूँ बिल्कुल। और मैं 15 लोगों के साथ में मुर्गी पालन के काम शुरू किए हूँ। अभी 476 महिलाएं हैं, उनके सालाना एक दीदियों का कम से कम साल भर में 25 से 30 हजार कमाती है एक दीदी। और उनके अलग अलग है हम लोगों का मुर्गी पालन। कोई 700 का मुर्गी पालन करते हैं, कोई 1400 का। So what Chandrakali shared was that she is from one of the most backward districts of India, Dindori, and she has never been to school. She has never been to formal education,
And despite of that, she is one of the founder members of the poultry cooperative, and she started her business with 15 members in the village, which has expanded to 476 members. And every woman rearer today earns at least an amount of 22,000 per month, per annually, from this business itself. So yeah, and this is what helps her to go on every day. Now coming to me, like why I joined the sector, I would like rather share my experience of why I stayed in the sector. My joining was kind of circumstantial. Why I remained was because like most of us will be knowing that PRADAN anyone joining PRADAN has to join an apprenticeship in the first year of being in PRADAN. So it is the experience of being an apprentice is a very like well-designed program which entails a part called village stay. An apprentice, any apprentice has to be in the village with a household for in the first month itself. So I too did the same. And while I was in the village, I had befriended a lot of women there. One woman in particular has remained with me. Pobita. I think I'm audible, right? Yeah. So Pobita Didi was a 22-year-old woman managing a 14-member household and had 4 children. And one day she shared with me, which has actually inspired me to stay in the sector, that she loved learning and going to school, which she could only do till she was class 7. And after that, like all other girls who are 11 or 12 years old, are married off in the village, or that is what the norm follows, what tradition followed in the village, in the caste itself. So during her marriage, her in-laws had promised her education, but after marriage, no one paid heed to her. She was 12 years old when she got married, and her in-laws post-marriage refused her education. She was hurt, she was angry, and she fought. She rebelled, and 3 months into the marriage, she left her in-laws and went back to her home, only to find out that she was pregnant already. Eventually, the then 12-year-old had to give up the fight. And while we were having the conversation, 10 years later and 4 children later, she was happy. She was very happy, and she credited all her happiness to the fact that she was a village leader. Her voice was then heard, not only by women, but also by men. And she loved that her opinions mattered, her voice mattered in her area. And she credited her change, her turning point in her life, to one other woman who had pushed her to join the self-help group in the village. She was 22 then, and I was 22 then. I was privileged and grateful. And somehow at that point in time, I wanted to be the other woman, the change vector, the transformer. Like maybe 8 years back, if I would be asked this question, I would term her the angel. But yes, 8 years later, I think PRADAN has introduced me to so many such women. And believe me, like I think if we can become the flicker to these wonderful women, then they can be the flame with which the world can be forever lit. And I think that has always kept me driving to be in the sector. And coming to the next part of the question, like what my idea of development is, I think it is a super goal. Where the last person's voice is heard. To me, it is a society where everyone is able to move to the next positive spiral. It is a society where one can dream and having the capacity to make choices. That was lovely, Poulomi. I think a lot of my friends also are at PRADAN, and they've also shared similar experiences. And I'm sure Pragati must have had the same experiences too, especially during COVID. And I think while Tina is not here, we could open it up for a discussion. She is back. Hello.
Bye. Hello, am I audible? Yes. Okay, I am audible to you all. Fine, thank you, Poulomi. Can Harshal join us? I think I'm having some issues. Hello, am I audible to all of you? Hello. Hello? 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 Am I audible to all of you? Yes, Harshal, we can. Hello, Harshal. Yes, you are on. Should I start then? Yeah, please start. I think I am audible, but you people are not audible to me. Hello. Something is going Harshal. wrong. My inspiration for coming in this sector is the place where I belong, the Gadchiroli, Maharashtra. My place is tribal dominated and heavily forested and known for its underdevelopment. So as a childhood, when I was growing as a teenager, I was thinking ki how this could happen to in region. So initially when I was growing, so I was asking myself, so what can I do for this? So that time I got an answer of doing UPSC. So I came to Pune for graduation and preparing for UPSC. But I found myself working with the municipal corporation school children's. So then again that work is for twice a week. So I joined another NGO where we were providing cycles to the village girls child whose like school is far away from their place, and the sanitary pad which was the reason a lot of dropouts during that menstrual cycle. So I was kind of changing the way I want to work in the community. So I thought of working a grassroots. So I went to one camp where I got to know about development studies and how people are working in the grassroots. So I joined the university and then I got to know about a lot of things. So now when I'm working in a mandala landscape, I'm kind of feeling it is my home. I was feeling where the tribal communities are mostly working with them. Like so, when I started last year, with natural farming, the GPTP, my GPTP we made from like a hamlet, Mahila Sabha to Gram Sabha to hamlet level, and when they so that was my when the plan got into GPTP, I was so happy that we can do decentralized planning at the village level. So my idea of development is to work with the people and to provide them equal opportunity and access to resources, which I maybe which I as a children didn't get in the starting. So that is there. Lakshmi ji said that she started working with FES from 2019. When she started, one survey was conducted where it said that out of 230 women in Singapore, 170 were malnourished. So then she started sitting with the women. So they started to discuss these things and how can we address that question. So they started creating so they started nutrition garden, and now
after 4 years, when survey once again conducted, so now only 40 women are remain malnourished, and they are work with them, and they have a target of 0 malnourished women in their village. About the natural farming, so initially there was only 1 or 2 crops they used to take in their land, but now with the natural farming techniques and intercropping techniques, they have a wide range of food available to them. Giving them more diversified food, which result in increasing nutritional quality of food as well, and saving their precious money as well. With women, very working in women now. Now women started participating in various events and institutions like Gram Sabha, and she happily said that women are participating more than men in Gram Sabha. So, thank you. Lovely, Harshal. I think all of the women who are here with us today are truly inspiring. And to keeping time in mind, I think let's move on to the next part of the discussion. And the other bit that we have, or the questions that we have right now, we also have a few questions in the chat, and we'll be happy to take them towards the end of the session. I would like to ask everyone that while we are all working on financial inclusion or livelihood generation in some way or the other, so in your experience, what are the key interventions or the prototypes that are helping marginalized community get out of poverty? And then essentially, I think another common stream that ties us all together is that we are working with youth. So over the years, what do you think, how the aspirations of youth have changed? How maybe the youth in different communities, we are all, I think, from different geographies as well. How do you think they aspire to help their family or their villages, and what are the different sources, let's say, where they are gathering information, knowledge from, or being placed, all of us, in remote areas, how are we building up on skills? So those are like the questions that I'm parking, and I think Poulomi, you can just start with, I think, your experience around the area, and then we can move ahead. Thank you, Drishti, for the question. So when we talk about rural youth, I think it's a bit of a broad-based term. So I think it depends on their exposures and the intergenerational exposures also. Though aspiration-wise, I think rural youth today visualizes themselves beyond the traditional livelihood occupation and more towards secondary and tertiary sector. The struggle they face is to cope up with a fast-paced world when they once leave their homes, house, and villages. Most youth today have internet exposures and in the livelihood basket, and that has also helped increase the livelihood basket over generations, with new skills and informations flowing in the village, mostly through youth. So like a decade back, when we specifically carried out the exercise on mapping their aspirations, the aspirations of the rural youth, it ranged from doing well for the community and moving towards the service sector roles, largely drawing from the examples they were witnessing in the area, such as teachers, patwari, panchayat secretary, forest beat guard, etc. However, in recent times, they're not like they're more exposed. They're more exposed to the outer world and are looking to expand their engagement, not just locally but outside also. Young girls are looking for more education and skilling opportunities and are trying to make a career out of it. Similarly, young boys and girls are, especially boys, are more involved in the political sphere to influence the local panchayats and other local actors for the better service delivery. This was something that was not so prominent like even a decade earlier. So yeah,
So I think, and the second question, that you had asked, given that we are based out of rural locations, how do we upgrade our skills and knowledge? Mostly, I think my style of learning is from my experiences, by experiencing it. So Pradhan gives me a lot of opportunities to experience, be in direct touch with the rural community, be like understanding their perspective is very unique, I think, which I have experienced over the period of time. Also, what helps me the most to learn is my immediate team. We work in a team of like 4 to 5 young professionals who are from diverse backgrounds, and with different orientations, different backgrounds, there is always a new perspective to add. So cross learning is a core way through which I'm learning. Then again, we also engage with departments around departmental liaisons, and then there are webinars, workshops, exposures for networking, and then different skilling programs that the organization offers. So yeah, that's how it's going. So I'll just ask Chandrakali Di to answer the same question. ये बोलना है हमारे गांव के जो बच्चे हैं आज के दिन में वो क्या एस्पायर करते हैं ना, मतलब क्या सपना देखते हैं, और फिर हम लोगों के गांव मतलब युवा बच्चे हैं, उनके सपना जो कि गांव में पढ़े लिखे 10वीं से 12वीं किए हैं, तो बच्चे उनका भी सपना होता है कि नहीं हम लोग अच्छा जॉब करते, शहर में रहते, और तो उनका हम लोग एक युवा संघ में हम लोग उसके द्वारा हम लोग बच्चों को अच्छी कंपनी या सरकारी जॉब में हम लोग उनको भेजते हैं, और उनके लिए ये चीज का प्रधान हम लोग पूरे संघ की दीदियां मिलके और अपने अपने बच्चों अपने गांव के पूरे जिले में देखते हैं, महिला संघ की जो जितने सदस्य हैं और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार घूमते रहते हैं, उनके लिए हम लोग रोजगार की व्यवस्था संघ के द्वारा करते हैं. So summarizing it briefly, as Chandrakali had introduced herself as being a member of a women federation, Rani Durgavati Tejaswini Mahila Sangh, this federation also has started working around linkaging youth, the young people of the area, of the block, to organizations that offer placements for a dignified job. So the federation helps in identifying youth who are interested through orientations and workshops, and then linking with some organizations that provide placement. And they are doing this for a last, I think, 3-4 years. आप अपना जानकारी कैसे बढ़ाते हो? हम लोग जैसे कि जेंडर के माध्यम से ट्रेनिंग हम लोगों को अधिकार के बारे में, महिला पुरुष में भेदभाव जो होती है, तो हम लोगों को जेंडर ट्रेनिंग के माध्यम से, और जो हम लोग एक साथ में खाना नहीं खाते थे, तो वो पति पत्नी में पहले मिस्टर खाना खाते थे, उसके बाद में हम लोग खाना खाते थे. ये इन चीज़ों में भी हम लोग ये चीज़ बदलाव किए हैं, और जो हम लोग बाहर निकल के कहीं नहीं बोल सकते थे, न किसी के सामने हम लोग बात नहीं रख सकते थे, तो हम लोग छोटी एक गांव में SHG के माध्यम से हम लोग को पहले बोलना सीखे हैं, फिर बोलने के बाद में बोलना सीखे, उसके बाद ये अधिकार क्या है, अपने अधिकार के बारे में, जंगल जमीन आदिवासी महिलाओं के साथ में हिंसा होती है, वो हिंसाओं के बारे में भी हम लोग पूरा ये चर्चा सभी ग्रुप के साथ में मिलकर चर्चा करते हैं. जो ग्राम सभा हुआ, तो ग्राम सभा में अधिकार किसको मिलना चाहिए, जिनका पहले होता था कि पैसा वाले हैं और जिनका ज्यादा जमीन है उनको पहले पात्रता दिया जाता था, तो ग्राम सभा में गरीब लोगों को नहीं सुना जाता था. तो हम लोग एक
समिति के माध्यम से ग्राम सभा में सभी महिलाएं मिलके और बातचीत रखते हैं कि किसको अधिकार ये मिलना चाहिए, इस चीज में हम लोग बातचीत रखते हैं। So she shared that she has initially learned how to talk to people, because initially they used to be afraid to speak to even outsiders in the village, and then something that she has understood is about the gender discrimination and how not to perpetuate it through their own practices. And self-help groups has been very helpful for her to upgrade her knowledge through discussions with the other members, and accessing trainings through different organizations and having exposures has helped her over the years to upgrade her skills and knowledge. Absolutely. I think institutions being linked to financial inclusion and empowerment truly are the way to go when it comes to livelihood generation, especially for I think women. When females band together, that is when I think they can move forward. So thank you Chandrakala दीदी, बहुत ही inspiring आपने कहानी सुनाई. And building on that, Pragati, I would like you to share your experience. Thank you, Drishti. So speaking about the major interventions and the prototypes that are being taken to alleviate poverty for the marginalized communities, we are majorly working in economic inclusion and poverty alleviation activities, which are land-based activities, livestock development, and women empowerment. So this organization, BIAF, has already has worked in 14 states, and it has touched more than 1 million lives. The small and marginalized farmers are supported with a Wadi model. So this is an integrated farming system approach. We support the farmers by providing them horticulture and forestry tree species. And these tree species have a gestation period of 3 to 5 years. So in this gestation period, we also support them by crop diversification. For example, we support them with vegetable cultivation and floriculture, which kind of gives them an income on an everyday basis. So this is majorly helping them for them to come out of poverty. And under women development activities, women in the community are encouraged to form groups called self-help groups. They're involved in saving, and skill development programs are conducted for them. E-Sakhi activity is one of them. And the youth, especially young women, they come forward and they proactively take part in these activities. And Vandana Tai is one live example sitting with me, who is also one of the EDOs of this organization. So they upskill themselves and gain knowledge in digital literacy. And now she's supporting the whole community by providing these services. She'll be speaking more about it, that what services does she actually provide to the community and how much has she in the last 3 years. जैसे कि मतलब मैं मॉल से मेरा जॉब छूट गया, उसके बाद मैं गांव में आई और तभी मेरे पास कोई काम नहीं था. तभी बायफ संस्था ने सर्च करके हम लोगों को मतलब चुना गया और उसके बाद जवाहर में हम लोगों का इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू लेने के बाद हम लोगों का सिलेक्शन हुआ. सिलेक्शन करने के बाद हम लोगों को फिनो बैंक करके उसका एक पे नियर बाय ऐप है, उसका ट्रेनिंग दिया. मतलब बायफ ने ट्रेनिंग दिया उसका. उसमें एपीसी जो है एईपीएस, जिसमें आधार विड्रॉ, मनी ट्रांसफर और बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट ये कैसे निकालते हैं वो सिखाया. उसके बाद यूटिलिटी करके है, उसमें हम लोगों को मोबाइल रिचार्ज, डिश टीवी रिचार्ज, लाइट बिल ये कैसे भरते ये सब सिखाया. और ई गवर्नेंस जो सुविधा है वो हम लोगों को मतलब हम लोगों को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं ये भी बायफ ने सिखा दिया. उसके बाद मतलब ये सब सीखने के बाद हम लोगों को मतलब ये ऑनलाइन कुछ पता भी नहीं था. जब भी मतलब मैंने मॉल में काम किया था फिर भी मैं इन सब चीज़ों में अनपढ़ी थी. मतलब मोबाइल यूज करना ये सब मुझे टेक्निकली नहीं आता था, जो कि मुझे बायफ ने सिखा दिया. मेरे जैसे ऐसे 90 लोग हैं जो अभी डिजिटल का काम कर रहे हैं जवाहर में. तो
ये ई गवर्नेंस स्किल और मतलब सुविधा देने के लिए हम लोगों को बायफ की तरफ से एक लैपटॉप या प्रिंटर, मतलब लेडीज का खुद का बिजनेस बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया। जब भी हम लोग काम कर रहे थे 2019 में, तभी कोरोना पीरियड था, बल्कि लोगों को जवाहर आने जाने के लिए कुछ मतलब यही नहीं था कि वो जवाहर में या फिर यहाँ पे जा सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं। तो तभी मतलब खुद को भी काम नहीं था और कुछ काम विलेज में भी नहीं था, जो काम तो कर रहे थे बट उसका पैसा कैसे निकाले, क्योंकि बहुत डर रहे थे लोग, और अपना खुद का पैसा होने के बाद भी वो नहीं जा रहे थे बैंक में। जैसे कि बायफ ने ये स्टार्ट करने के बाद हम लोगों का मतलब खुद का भी फायदा हो गया और लोगों का भी, मतलब तभी जीप में या बस में ट्रैवलिंग अगर करते थे तो 100 रुपीज ले रहे थे, जो कि लोगों के पहले से पैसे नहीं, और ये मतलब थोड़ा दिक्कतें आ रही थी लोगों को, पर ये चालू करने के बाद लोगों को बहुत आसान हो गया उसमें। फिर हम लोग मतलब अभी तक मैं 3 साल में 5,000 लोगों को सुविधा प्रोवाइड कर रही हूँ, और मतलब मेरे 5 ग्राम पंचायत हैं, उसमें 100 मतलब घर हैं, हाउस। तो उसमें फिर हर एक का अगर आधार थंब मशीन में चलेगा, मतलब हम लोगों को मार्फो मशीन दिया है, थंब मशीन दिया है, जिसमें मार्फो मंत्रा ये डिवाइस हम यूज कर सकते हैं। और उसको हम लोग मतलब हमारे पास पैसे नहीं थे तो उन लोगों को हम टाइम देते थे कि 3 दिनों के बाद आओ, 4 दिनों के बाद आओ। उसके बाद वो लोगों को विश्वास दिलाए, क्योंकि नया नया काम शुरू करे और लोगों को अगर पैसे का व्यवहार रहे तो लोगों को ट्रस्ट भी होना जरूरी है ना। अगर हम गांव में ही कर रहे हैं तो फिर लोग, शुरुआती में दिक्कत आई, लेकिन अभी मैं बहुत मतलब ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, लोगों को बहुत अभी 35 सुविधा लोगों को दे रही हूँ। जैसे कि मतलब जितना डिजिटल में व्यवहार है, जैसे 7/12 निकालना, इनकम सर्टिफिकेट निकालना, वोटर आईडी कार्ड, ये सब मतलब बोलने में जा रहे हैं तो बहुत सारा लिस्ट है, 35 सुविधा में अभी दे रही हूँ लोगों को। Has been clearly said by Vandana already. I'll just briefly summarize it that after providing training to all of these 90 EDOs, they are able to provide various services to their community people. And they include EEPS services, Aadhaar-enabled payment systems, and various utility services, for example, DTH recharge or mobile recharge, electricity bill payment. For all of these tiny things, initially villagers had to move out for their payment, but now they can complete all of these transactions sitting in their own village. And not just that, but if they had to withdraw cash, they can, saving time and their physical energy. And they can now do it as per their schedule and availability. And until now, Vandana has helped around 25,000 people, and she has completed transactions of up to 32 lakhs. And per month, she is able to support 300 to 400 people, doing a transaction of 3 to 4 lakhs per month. So I think these services are really helping the people and saving their time and energy. Thank you. That's great, Pragati and Vandana Bhai. आप बहुत सारी महिलाओं के साथ काम कर रहे हो। आई थिंक यहाँ पे भी जितने लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन हो। So, speaking of the questions that we had opened, from the perspective of my own experience, I think both Poulomi and Pragati have done a great job summarizing how the aspirations of the youth have been changing. From what I've seen here in Gujarat and across the areas that we work in, is also that the access they have to digital content or social media necessarily is translating to the fact that their aspirations are completely out of the box sometimes and not restricted to, let's say, what they would have been a decade ago. Probably a decade ago, maybe whatever
young person, a young female or a male could see around was his or her aspirations. Now that they have access to so much content, they aspire to go big. Let's say if earlier, a very naive example would be if earlier, let's say, a boy dreamed of getting a bike. So now he knows that I would rather get a Thar. Matlab mujhe, even if I want to go to the field, I would do that in a Thar because he has seen enough reels about it. So I think that way the aspirations are changing. And parallelly to that, the thing is that if they do try to migrate, lot of rural youth do not have the finances or the education to get into the organized sector, which necessarily means that if they do migrate to big cities, they end up on, let's say, losing out on any proper opportunity to generate income, which means they are worse off in a city than they were in rural India. Then essentially, even when they are, this is something I think Vaishali Ben would also elaborate on, even when they are in their small villages, they're either not interested in farming or their land has been fragmented or their family land has been fragmented to such an extent that they no more can sustain themselves through that small bit of income from the farm that or farmland that they now have. So this projects for all of us like a peculiar problem, which generally needs a solution. And coming to the solution, I think Poulomi and Pragati can also add to it afterwards. According to me, or even let's say the prototype that AKRSP is working on, we believe that a self-employment model, and that to a sustainable one, is what the answer to such a peculiar situation is. Although we work across the spectrum in terms of natural resource management, rural governance, and then work in enterprise, the common thread is that even in an agricultural-based household, if you support them with seeds or during the, let's say, sowing cycle, that's something. But if you're able to connect them to the market and tell them that this is how you can earn an income out of whatever you're doing, the next time they'll be able to do it themselves. So I think that's what the answer is, a self-employment model. That's what AKRSP has been working on too. We've been training, mentoring, and providing seed support to a lot of rural entrepreneurs who are working individually, who then band together, who start employing other people, essentially putting money back into the village economy. So those are the things, and I think Vaishali Ben is also one of the participants of the program. So she'll be able to tell you how it exactly looks in the ground, or if it has an impact, or what impact it has. तो कैसे आपने over the years growth किया, और AKRSP का जो प्रोग्राम था उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप अपने गांव के लिए क्या करना चाहते हो? इससे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो मुझे ट्रेनिंग मिली थी, AKRSP से मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली। मुझे मेरी स्किल डेवलपमेंट हुई, मुझे कैसे अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में रखना चाहिए, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे उसको डिस्प्ले में रखना चाहिए, अपनी प्रोडक्ट को हम दूसरों को बार्गेन करने के लिए हमें कैसे कैसे करना चाहिए। कोई पेम्पलेट है, बोर्ड है, हमारा नेम के लिए जो किया जा, सब कुछ हमको सिखाते थे। हमारी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमने बहुत अच्छा सीखा है। हम स्टेज पे, मैंने कभी स्टेज पे प्रोग्राम में कभी बोली नहीं थी, बाकी AKRSP में आके मुझे स्टेज पे अभी मुझे जहाँ भी बोले तो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतना आत्मविश्वास हो गया कि मैं कहीं भी जाके अपना प्रदर्शन कर सकती हूँ। अपनी जो आवाज़ है सबको, अपनी आवाज़ में अपना जर्नी सबको सुना सकती हूँ। क्योंकि जब मैं छोटे गांव से हूँ तो मुझे शर्म आती थी। गांव के लोग बोल रहे थे ये क्या वहाँ जा रही है, ये क्या बोल रही है, लड़की हो कैसा कर रही है, काम कर रही है, ऐसा सब कुछ मैंने फेस किया है। मैंने सब अपनी लाइफ में सब कुछ फेस किया है, क्योंकि मैं सब घर परिवार में सबसे बड़ी थी।
छोटी बहन को आगे बढ़ने के लिए मुझे खुद अपना सेटिस्फाइड किया, पढ़ाई सेटिस्फाई की, और मुझे सबको फेस करना था, क्योंकि जो मैं फेस कर रही हूँ आगे जाके मेरी बहन या मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर कोई फेस ना कर पाई। इसलिए मैंने सबकी ढाल बन के सबको फेस किया और अपनी बिजनेस को आगे ले जाने में जो हो सका वो, और मुझे इसमें AKRSP का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। उसने मुझे सब कुछ सिखाया अपना बिजनेस के बारे में, अपने पेम्पलेट से डिजिटल पेमेंट। मैं पेमेंट तो ले रही थी लेकिन डिजिटल पेमेंट बहुत कम ले रही थी। सब बोल रहे थे कि डिजिटल पेमेंट में ऐसा होता है, बैंक वाले ऐसे करते, बट यहाँ आके मुझे सब सिखाया कि हम डिजिटल पेमेंट लेके तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी इनकम ज्यादा दिखेगी, तुमसे ऐसे टैक्स लेंगे, ऐसे करेंगे, सब हमको डराते थे कि तुम ऐसा मत करो डिजिटल। अब तो मैं 5 रुपए भी कहीं देना हो तो मैं डिजिटल पेमेंट कर सकती हूँ, बिंदास करती हूँ, क्योंकि डिजिटल पेमेंट करना कोई गलत काम नहीं है। मत करो, ये मत करो। अब मुझे इस AKRSP में आके सब कुछ अच्छा सीखने को मिला, सब कुछ फेस किया। अब मैं कहीं भी जाऊँ किसी भी चीज के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। उसने मुझे सब AKRSP ने बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया है। मुझे कई सपोर्ट में भी कई चीजें मैंने इसमें से खरीद कर अपने बिजनेस में इसमें यूज किया है। उसमें मेरे यूज किए हुई चीज का मैंने अपनी इनकम में भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। और आप अपने फैमिली के लिए और अपने गांव के लिए आगे क्या करना चाहते हो? मैं अपने फैमिली के लिए और अपने गांव के लिए और अच्छा प्रदर्शन करना चाहूंगी। मैं जो अपना बिजनेस है अपने गांव के लिए और आगे बढ़ाना चाहूंगी। इसमें जो महिलाएं जुड़ रही है वो भविष्य में खुद अपने पैर पे मेरी ही तरह मुझसे भी बेहतर बनकर आगे जाके वो भी अपनी फैमिली, अपने मेंबर, घर मेंबर में सपोर्ट करे, इनकम दे, और वो खुद भी पैर पर खड़ी हो सके। किसी के लिए, पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना ना चाहे, खुद की इनकम से खुद का विकास कर सके, ऐसा मैं चाहूंगी। और इससे अच्छी राह चीनना चाहूंगी कि समाज को भी एक अच्छी सीख मिलनी चाहिए कि महिला भी किसी से कम नहीं होती, महिला आगे जाके सब कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं कि पढ़ी लिखी बेरोजगार महिलाओं को भी हम अच्छे शिक्षण और अच्छा सिखाए तो वो भी आगे जाके बहुत सारा कुछ कर सकते, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए वो भी एक मिसाल बन सकती है। Thank you, Vaishali Ben. So, to summarize quickly what Vaishali Ben said, she spoke about her participation in the enterprise development program, how post that she has been confident about a lot of things, be it public speaking or let's say something as simple as making a digital payment. And then moving on to how, what she would like to do for her village or the women in her village. I think one interesting thing that she said is that I would like these women to move forward and move further from where I have reached. So I think that is the sentiment that all of us, especially in the development sector, share. Essentially saying that I will handhold you and I hope that you handhold the next person, and then it all starts to have a ripple effect. I think that's what most of our the prototypes that most of our organizations also work on. So if Poulomi or Pragati would like to add to that, I think that would be lovely. So the like if I talk about how do we intervene or what are the prototypes, so like we engage in organizing vulnerable communities into collectives that help people, especially women, earn a decent living and support their families. We also help them access government programs and other entitlements as citizens like MGNREGS or National Rural Livelihood Mission, etc. Banks, for example. We primarily focus on women because we believe that even people considered to be the most disadvantaged in the society are capable of driving the change they need. We have rich experiences with women-led federations that work around issues like gender, rights, and entitlements, like Narmada Mahila Sangh, or cooperatives run by women generating multi-crores, like the one Chandrakali Didi is in, Rani Durgavati Murgi Palak Sangh. Our primary focus is to help people in the marginalized communities develop their own skills and initiatives instead of delivering services and solutions to them.
we aim for like more holistic and positive change in their social, psychological, and economic condition, so they can take total charge of their lives and engage with the world around them. We also partner with civil society organizations and government to influence development policies. We hope that our work at the grassroots and the broader partnerships will lead to large-scale positive change and influence the society as a whole. Chandrakali Didi will speak about what are the interventions they do and how do they impact poverty. तो दीदी अपना जो मुर्गी पालक संघ है वो कैसे काम करती है, मतलब कैसे शुरू करती है, क्या कैसे गरीबी दूर करती है? हम लोग अपने गांव स्तर में हम लोगों के SHG से हम लोग देखते हैं कि अगर जिन दीदियों की खेती बाड़ी नहीं है उन लोगों के साथ हम लोग एक घर के पास में उनका खुद का बाड़ी हो और उनके जिन भैया दीदियों को दोनों को एक जगह बैठा के हम लोग बातचीत करते हैं कि दीदी मुर्गी पालन काम करना चाह रही है तो क्या आप जगह दे सकते हैं करके, तो हम लोग स्टाम्प पेपर में हम लोग भैया से लिखवा के लेते हैं। भविष्य में कभी मतलब हो जाता है कि अगर बेघर हो गए दीदी तो उनके पति या तो उनका मृत्यु हो जाता है तो दूसरे पत्नी अगर ले आए तो वो फिर वो होता है कि नहीं उनके बच्चे रहते हैं, बेटी रहते हैं, बेटा, उनको उनका जो दीदी का अधिकार है, उनका फार्म है, उन्हीं को मिलना चाहिए, जिन दीदी के बच्चे को, और सबसे ज्यादा प्राथमिकता बेटी को दिए हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग बेटी को उत्तराधिकारी जो बैंक में हो, बैंक में हम लोगों का खाता दीदी के ही पैसा हाथ में मिलना चाहिए। और अगर भविष्य में दीदी नहीं जा सकती है, कुछ हो गया, तो जाके बेटी ला सकती है, पैसा बैंक से भी निकालती है। ये करते हैं हम लोग। और अभी 476 महिलाएं हैं, उनकी आय बढ़ाने के लिए हम लोग सदस्य नहीं जोड़ रहे हैं। 400 सदस्य हैं, 476, उनके आमदनी के लिए अब 1000 सीधे का फॉर्म बना रहे हैं दीदियों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका इनकम हो। और पोल्ट्री ही नहीं करते हैं हम लोग, खेती के भी काम करते हैं उसके साथ में, और रासायनिक खाद मतलब वो नहीं डालते, अपने वीट की हुई यूज करते हैं। So summarizing what Chandrakali said, that when a family or a household, a woman wants to be a rearer in her cooperative, so they first lay out the norm that the land on which the farm will be built should be in the name of the woman. So the family has to give the piece of land. There is an affidavit on the stamp paper claiming that the land belongs to the rearer, who is a woman. And this they do so that the asset is in the name of the woman. The income that comes from the poultry goes directly to the accounts of the women. The access to the accounts are to the woman and then their children, their own children, especially the daughters, so that these assets go whenever transferred gets transferred to the name of their daughters. So this is how they have agreed on making all the rearers women. And also at the same time, they have 476 members. They don't currently aim at increasing the number of members, but intensifying the livelihood interventions with them, so that the one who is earning say 30,000 annually can earn a double with time. Yeah, that's absolutely lovely. Vandana Tai or Pragati, would you like to add something? Hello, am I audible? Hello. Yeah. Yeah. So as Vaishali Ben and Poulomi spoke, the importance of the SHG women in helping the community, come forward and grow. I think these women groups are really helping in supporting each other, especially financially.
and alleviating poverty. Absolutely. So I think to sum up the discussion that all of us have had, I think institutions and then a model that sort of works on self-employment is the way to go, or so we hope, at least the ones present here. And speaking of how we've been working on ground, or how, let's say, Vaishali Ben, Chandrakali Didi or Vandana Tai have been the faces of the change that has been happening on the ground. I'm sure that we must have all faced some challenges along the journey, and that might be very different for, let's say, a development practitioner like us, or the community leader that we are with today. So if we could talk about what were these challenges and how did they overcome these challenges, and then maybe we can also speak about, as young professionals, again moving back to the topic, who are educated and choose to work on the ground, especially in terms of financial inclusion, what are the challenges that we face. I think we can start with a round of for the community leaders first, and then we can go next. आपको क्या दिक्कतें आई, आपको बता सकते हैं? एक्सपीरियंस, हाँ, मतलब दिक्कतें जो आई मेजरली। हाँ, मतलब मैम ये काम करते वक्त हम लोगों को दिक्कतें ये आई कि जैसे कि हम लोग डिजिटल और पैसों का व्यवहार कर रहे हैं, तो लोगों का ज़्यादा भरोसा बैंक में या फिर उसमें हो सकता है, और हम लोग अगर नए हैं तो हम लोगों को कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों ने स्पेशली मतलब गांव में एक पोस्टर लगवाया। उसमें उसके बाद गांव में जो ग्राम सभा जो मेन लोग हैं उनको बताया कि हम लोग ऐसा डिजिटल व्यवहार का काम कर रहे हैं और कितना कमीशन ले रहे हैं, ये सब उन लोगों को बताया। उसके बाद मतलब शुरू में जब भी काम कर रहे थे तभी इतना कस्टमर नहीं आए थे, और हम लोगों को बता दिया था कि पहले तुम अपने घर में कीजिए, मतलब खुद का, ससुर का या हस्बैंड का, इन लोगों का पहले ट्रांजैक्शन करो। वो अगर सक्सेसफुल रहा तो फिर आप लोगों को ये कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप और जहाँ पे मतलब तभी पब्लिसिटी करने के लिए कोरोना पीरियड में थोड़ा दिक्कत ही आ रहा था। फिर जो मेन लोग हैं उनको बता के हम लोगों ने अपना मतलब जाहिरात की। और एक्सपीरियंस के बारे में मैं बताऊंगी तो एक्सपीरियंस एक तो बहुत मतलब अच्छा भी आया और थोड़ा बुरा भी आया। जैसे कि मतलब बहुत अच्छा ये कि गांव को लोगों को हम लोग एनी टाइम सुविधा दे सकते हैं, मतलब चाहे रात में आओ या फिर दिन में आओ, कभी भी आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग एनी टाइम उनको सुविधा दे रहे थे। और उसके बाद मतलब ऐसा एक जो लीडर वुमेन रहती है हमारे गांव में मैम, बहुत शादीशुदा लोग जो है जो ड्रेस ये सब नहीं पहनते हैं, खाली साड़ी, और मैं ड्रेस पहनती थी तो मुझे बहुत लोग मतलब थोड़े से हंस रहे थे कि ये ड्रेस पहनती है ऐसा ऐसा, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ गई। बट ये अभी मॉडल लड़की है ऐसा वैसा मतलब बोल रहे थे, और मुझे अभी भी मैडम करके ही बोलते हैं, जो कि मतलब मेरे लिए थोड़ा पहले बुरा लग रहा था, बट मैडम करके फिर अभी जो गांव में एक जो बोलते हैं ना प्रमुख व्यक्ति जैसी बन गई हूँ। जो भी कुछ भी काम रहेगा या फिर कौन सी भी स्कीम रहेगी तो पहले मेरे पास आते हैं, फिर उसके बाद मेरे पास सॉल्व नहीं होती है तो फिर आगे जाते हैं। मतलब एक मैं वहाँ पे एक लीडर की तरह हूँ। मतलब ये मेरे लिए बहुत ग्रेटफुल है। और जैसे लोगों को मैंने मन से चाहा था कि मैं लोगों की सेवा करूं, और ये सब होते होते मैंने खुद की भी डेवलपमेंट की। जैसे कि ये बताओ ना कि मैं मतलब मेरे लिए मेरे ससुराल में मैम ना ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड भी काम नहीं करते थे, और जो खेतीबाड़ी में अगर रोजगार हमी का काम जो रहता है ना वही हम लोग करते थे। उसमें जो पैसा आएगा वो हम घर चलाते थे।
और ये काम मिलने के बाद फिर मैं सभी मतलब मेरे ऊपर ही डेवलपमेंट, जैसे घर के अभी मैं प्रमुख व्यक्ति हूँ, जैसे ससुर भी कुछ करना है तो मुझे पूछते हैं कि सुनदाई क्या करना है, मतलब ये हम लोगों को करना है तो कैसे करें, मतलब जो निर्णय ससुर लेते हैं वो नहीं, वो मैं अभी खुद डिसाइड करती हूँ। मतलब हम चारों मिलके, मेरा एक लड़का है और हम चार मतलब जॉइंट फैमिली है। फिर उसमें कुछ भी निर्णय लेना है तो पहले मुझे पूछते हैं कि ये सही रहेगा नहीं सही रहेगा, इसके बाद हम लोग करते हैं। तो मैम देख, मैंने मतलब मेरा खुद का घर अच्छा नहीं था और फिर वो मैंने बनाया, क्योंकि बायफ के थ्रू में एक मॉडल ई दोस्त जैसे बनी, तो इसलिए मेरे इधर बहुत बाहर की विजिट होती थी, मतलब एक साथ मतलब सर बाहर देश के सर आते थे, तो फिर मुझे थोड़ा बुरा लगता था कि मतलब ये मेरा घर ऐसा वैसा है। फिर बहुत सारी विजिटें हो रही थी, मतलब मैं कैसे कर रही हूँ इसके लिए। फिर मैंने थोड़ा मेरा घर बनाया, उसके बाद मैंने स्कूटी खुद के लिए मतलब जाहिरात करने मतलब यहाँ वहाँ जाके लोगों को सुविधा प्रोवाइड कर सकूं। और ई श्रम कार्ड का जब भी आया था मैम, तभी मैंने एक एक दिन में 2-2 हजार का मतलब कमाई की। तो मेरे लिए मतलब तभी मॉल में मैम मैं 20,000 15,000 ले रही थी, और कोरोना के पीरियड में स्टॉप हो गया पूरा, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं अभी पूरी स्टॉप हो गई, मैं खुद का कैसे कर सकूं। बट ई दोस्त बनने के बाद फिर से वो हौसला आ गया कि मैं अभी कर सकती हूँ। अभी मैम मैं बाहर जाके ई दोस्त को ट्रेनिंग भी दे सकती हूँ, मैं एमपी में भी गई, मतलब महाराष्ट्र के कोने कोने में जाके ट्रेनिंग देती हूँ। मतलब इतना भरोसा खुद पे आ गया कि मैं कर सकती हूँ। और मेरा दादी का सपना था, मेरे को माँ बाप नहीं है, दादी ने मुझे पाला पोसा है, तो फिर उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मतलब नाती जो है वो भी कर रही है। और मुझे तो ये लगता है कि मैं जो हमारे उनको समझ में नहीं आते हैं वो लोगों को सेवा कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है मैम। और मैंने खुद का बोरवेल भी खेत में, मतलब खेत में डेवलप करने के लिए खुद का बोरवेल बनाया, बावड़ी बनाई, मोगरा लगाया, मतलब बहुत सारा मैंने डेवलप किया है। वाह वंदना ताई, गुजरात भी आओगे आप ट्रेनिंग देने? Pragati, if you could quickly sum it up in a line or two. Yeah, sure. So as she spoke about that, initially the main issues were creating the awareness and building the trust among the people, because why would they trust somebody, especially in things matters related to finance. But slowly and steadily she made them believe that she's going to help them and provide the services authentically. And since then she's working as a leader, as she mentioned that in the village she now is seen as a leader. And she had to face a lot of challenges, but then she faced them head on, and she's being an example now in the whole community. And in this whole process her self-development has also happened, and not just in terms of like buying assets like scooty or building a home or some those things, but also from standing behind the curtain to coming ahead and being a prominent decision maker. I think that's something great that has happened in her life. And um, she's exploring on her own now the places, and she's completing all her dreams. uh, well, the major challenges were the trust building and creating awareness. But apart from that, also, I believe the challenges of working in these kind of rural areas is that these are very remote, and especially this region is very hilly. So working here over here is very, very challenging, especially in harsh climatic conditions like monsoon or uh, severe hot climatic conditions. And also, a major issue of this area is that migration. People really migrate because they cannot cultivate throughout the year. So when they're not able to grow post monsoon, they just migrate. As Vandarat, I was also working in Thane because she had also migrated there, and also this region has very low literacy levels. So all of these are the challenges that we as staff also face. And but we try to build a very good rapport with the communities, so that we are able to navigate through these challenges swiftly.
और मैम एक बात बोलूं, जैसे कि हम लोगों ने ई दोस्त बनने के बाद एक बचत गट भी मतलब स्थापन की, और बच्चों के लिए मतलब अच्छा मतलब ना मैम, मेरा खुद का इंग्लिश की वजह से 3 जॉब छूट गए, इंग्लिश नहीं आने की वजह से। तो फिर मैंने सोची कि मेरा अगर बेटा पढ़ेगा तो इंग्लिश ही पढ़ेगा, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए मुझे जितना भी दिक्कतें आती है ना मैम, मैं वो मतलब वैसे डरती नहीं हूँ कि सामने समस्या हो और मैं उसको भाग के चले गए, ऐसा कभी नहीं होता है। वो मैं जाके वो सॉल्व करके, मतलब मेरा अभी बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और सीबीएस बोर्ड में है। तो ये मेरे लिए मतलब मेरा एक सपना है कि मैं मेरे फैमिली को बहुत थोड़ा मतलब इतना भी नहीं पर आगे लेके चलूं, और मेरा जो सपना है वो मेरे बेटे में पूरा कर सकूं। बस इतना ही, थैंक यू। अरे थैंक यू वंदना ताई, बिल्कुल होगा, आपका बेटा बड़ा अफसर बनेगा, मतलब जो भी वो बनना चाहे। And thank you, Pragati. I completely relate to a lot of things that you said, but we persevere on. And I think Poulomi and Chandrakala Didi, if you could also, but also in the paucity of time, be a little short and tell us what are the challenges that you've been facing and how you've overcome them. क्या क्या दिक्कतें आती है? कोऑपरेटिव बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आई हुई है हम लोगों को। 15 लोगों से तो शुरू ही किए थे हम लोग। 15 सदस्य मेरे ही गांव से दीदियां 15 थी, उनके साथ में एक छोटा सा कोऑपरेटिव बनाए हम लोग। 10,000 से पोल्ट्री का काम, 10,000 मुर्गा पालन करके हम लोग चालू किए, लोन लेके। वो फिर हम लोगों के पास में मशीन नहीं था दाना बनाने वाला उनको खिलाने के लिए, और मक्के नहीं मिलती थी, मार्केटिंग नहीं था, न कुछ। हम लोग को तो कहाँ बेचना है, मुर्गी पालन तो चालू किए हैं पर कहाँ बेचेंगे, ये चीज़ हम लोगों के पास में नहीं था। तो फिर बहुत मुश्किल, प्रदान संस्था नहीं हारना है करके कलेक्टर से हम लोगों को फिर फीड का फैक्ट्री मिला, एक मुर्गा बेचने के लिए गाड़ी भी मिला। चैलेंजेस तो मुझे भी बहुत आई थी मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने में, क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे जो अपनी टीम में महिलाओं को काम के लिए बुलाने जाती हूँ, तो सब घर वाले मना करते हैं कि नहीं, हमारी लिए महिलाएं बाहर काम करने के लिए नहीं आएगी, ऐसे नहीं जाती है, क्योंकि सब गांव में जा रहे थे। गांव है तो गांव में सब खेतीबाड़ी में ही जा रहे। मैंने बोला आप पूरे दिन धूप में करोगे, उतनी कमाई में तुम्हें दोपहर तक की हो, जितने तक की होती उतनी तुम्हें दूंगी। मैं तुम्हें छांव में काम कराऊंगी, नहीं कि धूप में कराऊंगी। कोई इतना वर्क भी नहीं है, हार्ड वर्क भी नहीं है कि तुम्हें इतना हार्ड वर्क नहीं है तो तुम्हें इतनी कमाई मिल रही है, तो तुम क्यों मना कर रही हो। उसने भी अपने घर से दिक्कत होती हुए भी कई बार मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ काम करने आई है। वो सब महिलाओं को मैं शुक्रिया करूंगी, क्योंकि उसके सपोर्ट के कारण ही मैं आज आगे बढ़ पाई हूँ। अगर वो अपने घर को फेस नहीं कर पाती तो वो मेरे साथ काम करने नहीं आती और मैं भी आगे नहीं बढ़ पाती। वो खुद तो आगे बढ़ी, साथ साथ मुझे भी आगे बढ़ने का एक मौका मिला। और मुझे ये दिक्कत पहले तो फैमिली से ही हुई थी। मैंने फैमिली में कई बार बोला कि मैं ऐसा करना चाहती, बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा चांस तो मैं ऐसे भाई। मुझे मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट मिला था, उसने मुझे फुल सपोर्ट किया। हाल में हम कहीं भी जा रहे हो, वो हम दोनों साथ ही होते हैं। वो उसको भी सब रसोई का, केटरस का सब कुछ आता है, उसको मिठाई फरसाण सब कुछ आता है। हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ कर रहे हैं। और जब मुझे बड़े ऑर्डर मिलते थे, तो बड़े ऑर्डर मिलने के लिए मुझे बहुत दिक्कतें होती थी, क्योंकि बड़ा ऑर्डर होता था तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, महिलाओं को एक गांव से दूसरे गांव ले जाने के लिए मुझे जो खर्च होते थे वो भी बहुत ज्यादा। लेकिन मैं कभी मना नहीं कही, क्योंकि जो अगर मैं एक बार मना करती तो दूसरी बार कोई मेरे पास आता नहीं। मुझे दिक्कत होते हुए भी मैंने उस दिक्कत को हमेशा फेस किया, उसका सामना करके भी मैंने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। और उसमें मुझे मेरे पति का, बाद में मेरी फैमिली भी अब तो मुझे सपोर्ट करने, पहले मुझे मना कर रही थी, अब मुझे वो भी सपोर्ट कर रही। जैसे वन्ना ताई ने बोला कि फैमिली वाले पहला कुछ पूछते नहीं, अब मुझे भी मेरे घर में लीडरशिप मिल रही है। कुछ भी काम हो, कुछ भी हो, पहले मुझे पूछते हैं
ऐसा करना चाहिए, ऐसे करते हैं क्योंकि अब हम इनकम कर रहे हैं ना, इसलिए हमारी इज्जत बढ़ रही है। पहले हमारी इज्जत नहीं थी, क्या महिलाएं तो ऐसी होती है, महिलाएं कोने में पड़ी रहती है, ऐसा ही सब सोचते थे। पर अब महिला जो कमाई कर रही है ना, उससे उसकी इज्जत भी मिल रही है। मैं भी पढ़ी लिखी थी, मुझे कहीं भी जॉब मिल सकती थी, 5,000 10,000, पर जॉब से एक इनकम एक लेवल होता है कि इतने ही तक मिलते, लेकिन खुद का बिजनेस करो तो एक बार 5,000 मिलेगा तो दूसरे बार 15-20, मैंने कई बार एक मंथ में 50,000 तक का इनकम की हुई है, क्योंकि जैसा ऑर्डर था। और बाद में मैंने अपने हस्बैंड को एक फास्ट फूड की शॉप भी खुली कर दी। अभी मेरे गांव में फास्ट फूड की शॉप भी है। ऐसे मैंने अपने परिवार को बहुत हेल्प किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे कारण मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो पाई है। थैंक यू। Thank you, Vaishali Ben. So to sum it up quickly, or rather highlight few of the points that she said that in a village women are not allowed to do a lot of stuff. Also, Vandana Tai pointed out that they are never asked about their opinion. That's something that happens in cities too, I guess. But once they started earning an income, they are not only being asked about how the household should be run, but they've become community leaders. And another interesting thing that I've been wanting Vaishali Ben to highlight is that in a curious case of role reversal, she has helped her husband set up a shop in the village. And we've had many such stories where women started small tailoring units and their husbands used to be daily wage laborers. Eventually, they taught them how to sew and now they work together. So that's something I think I didn't foresee coming, but has been happening in multiple cases. So that's, I think, truly brave for someone like Vaishali Ben or Vandana Tai or Chandrakala Di to do. And agreeing with Pragati, I think the major challenge that I faced as a professional was the lifestyle changes that happened. I was in a new city where I did not know the language or anyone at all. And in one word, how I've overcome them is because the community has opened its heart out to me. I haven't visited one single person in the entire duration of 1 year who did not ask me to stay with them the night or eat and then leave. Every time if I would go to Vaishali Ben there, I have never come back empty stomach. So I think that's how it has worked. And I think that's about it. But Poulomi and Chandrakala Didi, we lost you. So maybe you could quickly tell us. So, I like what Chandrakali was sharing while we lost the network was that they had a problem from the very basics while they started making the poultry cooperative, be it market, be it the fodder. But there has been incessant support over the time and immense hard work that these women had put into to make it what it is today. There has been support from departments and organizations like ours that has helped them move forward. And today she is a change maker and bread earner in the family, respected for her decisions, and she wants the best for her daughter, her children. So whenever she, like, if she buys a phone for her son, it's always for her daughter also. And her daughter aspires in arts. She likes to do paintings. So she wants her to use her networks so that she gets a proper place to position her art. About the challenges that I face, or we face, the development practitioners face, adding to what Pragati and Drishti has said, I think I also see that we need more collaborative spaces in government spheres. So, which is currently limited to only piloting and ideation. A little more space for scaling it up and facilitating multi-departmental convergence, I think, can help us bring larger change. Yeah,
and also more safe space for women, more women everywhere. Absolutely. Thank you. I think as we come towards the end of the session, thank you for joining. And I'd like to end on the note that I hope together we persevere on and continue to amplify the impact that we've been having and continue to put forth women like Vaishali Ben, Vandana Di, and Chandrakala. So, yeah. Thank you, everyone. Thank you, Chanakya.